Yes. What we had studied in the last lecture? Cost of production. Yes, cost production. Then we had seen economic cost, accounting cost, और कौन से cost देखे थे? Private cost, social cost, Private cost, accounting cost, economic cost, yes, explicit cost, implicit cost, short run cost. short-term cost. So we have studied the cost. Okay. Now long run cost also we had studied. Then we were studying about the economies of the scale. Economy of the scale also we have studied that what is mean by fixed cost and what is mean by variable cost. Variable cost यानी जितना भी आपका प्रोडक्शन वेरी होता है उसके हिसाब से जो वेरी होती है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और प्रोडक्शन सिस्टम वेरी होने से जो जो कॉस्ट वेरी नहीं होती है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, दैट वी हैड स्टडीड। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल में आपको क्या सीखना है कि you have to decide your production level up to that point where overall cost or aggregate cost is towards minimum set. So aggregate it is mean, but it is average total cost. Total cost consists of fixed cost as well as variable cost. For example, if I'm producing some units, at that time I have to rent one house or rent one factory. तो फैक्ट्री को जो मैं रेंट दे रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज योर फिक्स्ड कॉस्ट। एंड जो रॉ मटेरियल परचेस किया तो रॉ मटेरियल का पैसा, लेबर का पैसा, मशीनरी के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का पैसा, तो ये सारे हैं मेरे वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी? टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस अदर एक्सपेंसेस, दैट इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, जब कोई भी हम लोग प्रोडक्शन करेंगे एट दैट टाइम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस योर वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट योर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस। सो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रोडक्शन करते समय मैंने क्या करना चाहिए, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट इज गोइंग टू चेंज एज पर द इनपुट्स। Getting this? Try to understand this. यानी अगर मैंने जीरो प्रोडक्शन किया तो मुझे जीरो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, मींस मुझे जीरो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। अगर एक प्रोडक्शन किया तो एक के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आएगी, अगर दो किया तो दो के हिसाब से आएगी, चार किया तो। इसका मतलब जैसे जैसे मैं मेरा प्रोडक्शन लेवल बढ़ाऊंगा ना वैसे वैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट वेरी होगी। गेटिंग दिस? बट माई फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल फॉर एंटायर प्रोडक्शन। मुझे जो रेंट देना है वो तो फिक्स है, कितना भी प्रोडक्शन करो, चाहे एक प्रोडक्शन करो, जीरो प्रोडक्शन करो या 100 का प्रोडक्शन करो, लेकिन फिक्स कॉस्ट इज रिमेन फिक्स थ्रू आउट द प्रोडक्शन। गेटिंग दिस? बट वेरिएबल कॉस्ट इज चेंजिंग एज पर द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो उसमें क्या है, इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, आपको प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करते करते समय आपको क्या होना चाहिए, मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी होगा, बढ़ के जाएगा, लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव वन एग्जांपल। अगर मुझे कुछ यूनिट्स परचेस करने, यूनिट प्रोडक्शन करना है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई प्रोड्यूस one unit, at that time I have to purchase raw material of only one unit. My labor will also work on the one unit. My machinery will run only for one unit. Means what, one unit के लिए labor cost कितना है, for example 50 rupees per unit. मटेरियल का लग गया फॉर एग्जांपल 50 रुपीज, तो 50 प्लस 50 100, और मशीनरी का हो गया फॉर एग्जांपल 50, तो एक यूनिट के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है मेरा, 150 रुपीज। अगर मैंने दो प्रोडक्शन किया तो कितना होगा, 150 इंटू 2 यूनिट्स मीन्स व्हाट, 300 होगा। अगर मैंने तीन प्रोडक्शन किया तो 150 इंटू 3 इक्वल टू 450। अगर 100 प्रोडक्शन किया तो 150 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15,000 का हो जाएगा। अगर 10 का प्रोडक्शन किया तो 150 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा
150 into 10 is equal to 115 यूनिट होगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाऊंगा उसके हिसाब से मेरी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने वाली है। गेटिंग दिस? बट फिक्स कॉस्ट का क्या है? चाहे फॉर दिस यूनिट आई हैव पेड रेंट ऑफ 5000। गेटिंग दिस? Means what? If I produce one unit at that time, my 5000 divided by unit 1 is equal to 5000 मेरा फिक्स कॉस्ट। अगर मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस करे तो कितना हो जाएगा मेरी फिक्स कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 150 into 10 is equal to it is 1500। लेकिन फिक्स कॉस्ट कितने हो गई? दैट इज फॉर एग्जांपल 5000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 500 रुपया। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगी एट लेवल ऑफ यूनिट? 10 यूनिट। अगर मैंने 10 यूनिट बनाए तो मेरा फिक्स कॉस्ट आया 500 रुपीज प्लस मेरा वेरिएबल कॉस्ट आया था 1500। तो मेरा टोटल कॉस्ट बन गई दैट इज 2000। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने 20 यूनिट्स बनाया तो कितना होगा वेरिएबल कॉस्ट? 150 into 20 इक्वल टू 3000 प्लस अभी देखिए वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई लेकिन 20 यूनिट्स बनाया तो मेरा फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता है। कैसे? 5000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 250 आया। गेटिंग दिस? सो पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है। जितने भी ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा उतने भी क्या होती है? फिक्स कॉस्ट कम होती है। तो मुझे प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करते समय मुझे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये कम से कम रखना है। ये क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। अकॉर्डिंगली यू नीड टू ऐड द योर टोटल आउटपुट। उसके हिसाब से मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना। कुछ सर्टेन लेवल तक क्या हो जाएगा? मेरा टोटल कॉस्ट नीचे आएगा। लेकिन once I reach to that total at a certain level then उसके बाद मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ जाए। इसलिए मुझे वो मिनिमम ये इसलिए मुझे वो पीक पॉइंट ढूंढना है एंड दैट पीक पॉइंट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, अभी ये था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उसमें क्या है? जैसे जैसे आपका टोटल कॉस्ट तो फिक्स है। जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्शन लेवल बढ़ाओगे उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज। बट जैसे जैसे आप आपके प्रोडक्शन लेवल बढ़ाओगे वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज। अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैं और एक एग्जांपल देता। फॉर एग्जांपल फॉर दिस वन लेक्चर आई एम गेटिंग 1000 रुपीज एज अ रेम्यूनरेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये लेक्चर 10 लोगों ने अटेंड किया अभी तो कितना हो गया? 1000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना आया? 100 रुपीज पर यूनिट। पर स्टूडेंट कितना चार्ज बैठ गया? 100 रुपीज। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स कॉस्ट पर स्टूडेंट इज 100 रुपीज। अगर ये लेक्चर मान लो 20 स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं तो फिक्स कॉस्ट पर स्टूडेंट कितना हो गया? 1000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 50 रुपया पर। अगर यही लेक्चर 40 स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं तो कितना हो गया? 1000 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 25 रुपीज पर स्टूडेंट। मीन्स व्हाट? फिक्स कॉस्ट इज चेंजिंग एज पर द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर यही लेक्चर 50 लोग अटेंड करते हैं तो 1000 इज माय फिक्स कॉस्ट। अगर किसी ने भी या एक भी स्टूडेंट ने अटेंड किया तो पर स्टूडेंट कितना कॉस्ट हो गया? 1000। अगर 50 लोगों ने अटेंड किया तो 1000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 25 रुपीज। गेटिंग दिस? Do you understand the concept of fixed cost and variable cost, how it is increasing and how it is decreasing? Tell me. अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुआ है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल आप ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड। टेल मी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कांसेप्ट ध्यान में आया क्या? Yes, are you attending? Are you getting my voice? यस सर। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या? वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलती है और वेरिएबल कॉस्ट कैसे वेरी होती है और फिक्स कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप? यस सर।
ओके, अभी इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी क्या है कि आई हैव टू व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट आई हैव टू ऐड माय फिक्स कॉस्ट प्लस माय वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 5000 रुपीज, ओके, और एंटायर मंथ। और एक महीने में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल 50, so 50 into 150 that will be your variable cost. So total cost is the total fixed cost plus total variable cost, that is called as the total cost. अभी ये टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल, हमारा प्रोडक्शन लेवल आई हैव टू डिसाइड कि वेदर आई शुड प्रोड्यूस 50, 100, 1000, 10,000 या 50,000, तो कितना प्रोडक्शन लेवल होना चाहिए। माय प्रोडक्शन लेवल शुड फॉलो इकोनॉमी ऑफ स्केल। मेरा प्रोडक्शन लेवल इसी तरीके से मुझे डिसाइड करना है कि जो प्रोडक्शन लेवल तक मैं प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट डिक्रीज होगा, लेकिन कितने तक, कुछ ऐसी लेवल आएगी मेरे प्रोडक्शन की वहां तक ही मेरा टोटल कॉस्ट डिक्रीज होगा। अगर उससे भी ज्यादा मैंने प्रोडक्शन किया तो मेरा फिर प्रोडक्शन लेवल टोटल कॉस्ट फिर अगेन इंक्रीज होगा। तो वो पीक पॉइंट मुझे ढूंढना है कि जहां पे मेरा टोटल कॉस्ट कम होती है और उसके बाद उससे उससे भी मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया तो फिर एक बार मेरे टोटल कॉस्ट इंक्रीज होने लगती है। तो मुझे जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने लगेगी उधर ही स्टॉप करना है मेरा प्रोडक्शन, उतना ही लेवल ऑफ एक्टिविटी रखना है। इट मे बी 40 यूनिट्स, इट मे बी 50 यूनिट्स, इट मे बी 60 यूनिट्स, दैट यू हैव टू डिसाइड। दैट इज नथिंग बट इकोनॉमी ऑफ स्केल। अभी देखिए उसका बैकग्राउंड, जो कुछ अभी मैंने बताया वही यहाँ पे मैंने देखा है। See, the economy of scale are the cost advantage earned by the companies when production becomes efficient. Efficient production होता है तभी हम लोग economy of scale attain कर सकते हैं। Companies can achieve economy of scale by increasing production and lowering the cost. कम से कम कीमत में ज्यादा प्रोडक्शन करना है, economy of scale. So if total cost of product is less, then we will earn the more profit. This happens because costs are spread on large number of level of quantity के ऊपर हमारे cost vary होते हैं। Cost can be fixed and variable, अभी मैंने बताया। When more units of goods or service can be produced as a large scale, अगर ज्यादा प्रोडक्शन किया हम लोगों ने तो क्या होती है देखिए, yet on average fewer input cost, economy of scale are said to be achieved. अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया, हायर इफिशियंसी दिखाया तो क्या होता है, मेरा इकोनॉमी ऑफ स्केल इंक्रीज होता है। गेटिंग दिस? Again, when average cost starts following and output increases and economy of scale occurs, यानी टोटल एवरेज कॉस्ट जब तक डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने लगती है, that point is called as economy of scale. Then it refers to the cost advantage experienced by the firm when it increases the level of active output. जब से वो आउटपुट ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे तब जहां पे, जब तक उसका कॉस्ट में रिडक्शन होती है, दैट इज नथिंग बट योर इकोनॉमी ऑफ स्केल। एंड द एडवांटेज अराइज ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। तो उसमें क्या है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन। अभी मैंने बताया कि if my lecture is attended by one student, that time per unit fixed cost is 1000 rupees। अगर दो स्टूडेंट ने अटेंड किया तो 500 होगा, अगर चार स्टूडेंट ने अटेंड किया तो 250 होगा, अगर 10 स्टूडेंट ने अटेंड किया तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। मीन्स व्हाट, per unit fixed cost is changing as per your level of activity. Greater the quantity of output produced, the lower the cost per unit fixed, the lower the per unit fixed cost। जितने ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे आएगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल also result in fall in the average variable cost. Average variable cost, I am not talking about the variable cost, but its average variable cost can also change, क्योंकि रेट ऑफ इनपुट्स, रेट ऑफ रॉ मटेरियल कैन चेंज। अगर आज मैंने रॉ मटेरियल लिया, सीमेंट का आज एक बैग लिया तो फॉर एग्जांपल 300 रुपए मेरे जाते हैं। बट इफ आई प्रोड्यूस, इफ आई मैन्युफैक्चर, इफ आई परचेस द सेम इन द नेक्स्ट वीक, एट दैट टाइम कॉस्ट ऑफ दैट रॉ मटेरियल कैन वेरी। वहां पे मुझे 250, अगर सीमेंट के प्राइसेस नीचे आते हैं तो 250 को भी मिलेगा, उसके आगे वाले हफ्ते में मुझे 350 को भी मिलेगा, लेकिन एवरेज प्राइस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस एज वेल if you are producing more number of units.
This is brought about the operational efficiencies and synergies as a result of increase in the scale of production. ये कब आती है? अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे. Getting this? The economy of scale are the cost reductions that occur when companies increase the production. जब production level जब company increase करेगी तभी वो मिलता है. So fixed cost like administration spread over the more number of years. Fixed cost जितना भी हम लोग लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाएंगे उसके ऊपर वेरी होता है. So these are the some of the areas due to which we will get the economy of scale. Buy in bulk. अगर ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर दिया तो मुझे कम कीमत में मिलता है. मीन्स व्हाट आई एम डूइंग कॉस्ट सेविंग. देन एफिशिएंट प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग करेंगे विथ रिजेक्शन, with less rejection and less mistakes. Then reduction in the promotion cost. अगर एक ऑर्डर देना है तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे? एनुअल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. अगर ज्यादा से ज्यादा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम आ जाएगा. स्प्रेड द रिस्क. तो स्प्रेड द रिस्क यानी अगर हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी ज्यादा रहेगा तो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू minimize the risk in the production, risk in the market, risk in the demand supply. Then if we are doing this production throughout the year for number of units you can produce more, at that time you will get the cheaper amount of capital with less interest rate. Then you can also save reduction in the logistic cost, that is the transportation and supply related cost. That's why economy of scale is important factor. So they will give me these kind of benefits. So it will give us opportunity to buy in the bulk. Purchase bulk में करना है, प्रोडक्शन इफिशिएंटली करना है, प्रमोशन कॉस्ट में रिडक्शन करती है, रिस्क जो होती है वो स्प्रेड होती है अक्रॉस द ईयर, अक्रॉस द मंथ. कैपिटल्स हम लोगों को क्या होता है? चीपर इंटरेस्ट में मिलता है और रिडक्शन लॉजिस्टिक कॉस्ट में रिडक्शन होता है. उसके इफेक्ट क्या होते हैं देखिए. इट रिड्यूसेस पर यूनिट फिक्स कॉस्ट. जितना भी प्रोडक्शन ज्यादा करोगे उतना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे आएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन अब हमारा बढ़ेगा. द फिक्स कॉस्ट गेट स्प्रेड ओवर मोर आउटपुट देन बिफोर. तो फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन हर एक यूनिट का ज्यादा आएगा. सो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस. This occurs as an expanded scale of production increases efficiency of the production process. जितना भी प्रोडक्शन ज्यादा करोगे उतना हम लोग मेरा खुद का एफिशिएंसी ज्यादा यूज करो. दैट्स व्हाई आई विल सेव द कॉस्ट. दैट इज समथिंग अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल. डू यू अंडरस्टैंड दिस? आई होप यू हैव understood this concept of economies of scale. Yes, sir. Okay. Now next is the cost function. Cost function means what? It is the relationship between your input prices and output quantity. कितना खर्चा किया और कितना बेनिफिट हुआ. कितना खर्चा किया. We have already studied the production function. Production function is the function of land, capital and labor. हम लोगों ने देखा था Q is equal to F of C, L and N देखा था. अभी cost function देखना है. Means what is the relationship between cost which we have incurred and what is the input, what is the quantity or what is the output which we have received. Okay. So it is the cost of making that output. एक output बनाने के लिए जो cost आती है, that is something about cost output. Those input costs, input prices often applied through the use of cost curve by companies to minimize cost and maximize production efficiency. So input prices, that is something about cost. That cost curve may increase or decrease, but it vary as along with your production efficiency. जितना भी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे accordingly your total cost may increase or decrease. Getting this? So with respect to your production, with respect to your level of activity, your total cost curve can also vary. It will be not remain constant because total cost consists of fixed cost and variable cost. Fixed costs will remain constant, but variable cost will vary as per your production system. So cost function measures the minimum cost of producing a given level of activity for some fixed factor prices. तो fixed prices में हमारा total cost minimum रहना चाहिए. Accordingly, we need to decide our level of output.
The cost function describes the economic possibilities of the firm, economic status of the firm that we can find with the help of this cost function. And by incorporating prices of inputs, by adding the prices of inputs into the production function में हम लोग input prices add करेंगे, one obtain the cost function, since cost function is derived from the production function. A production function, once we have decided the production function, then we can find out the cost function. Okay, अभी देखिए, what is the relationship between cost and production output? What is the relationship between cost and production output that we have to study? Here we have to study three curves or three costs. One is the TVC. TVC is nothing but total variable cost. The next is the TFC, that is the total fixed cost, and last is the total cost. So we have to study the behavior of, we have to study the trend of total variable cost, total fixed cost and total cost with respect to your production output. मेरा प्रोडक्शन आउटपुट चेंज होने से ये तीनों कॉस्ट में क्या चेंजेस होते हैं, उनका ट्रेंड क्या है, दैट वी हैव टू स्टडी इन कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप. कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप में हम लोगों को ये सीख. ओके, तो इसका एक ग्राफ है, मैं आपको पहले ग्राफ दिखाऊंगा. ये वाला ग्राफ, ये हम लोगों को स्टडी करना है, मार्जिनल कॉस्ट. तो इन शॉर्ट रन में कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. शॉर्ट रन यानी अप टू 1 ईयर, लॉन्ग रन यानी मोर देन 1 ईयर. जो अभी देखिए, a proper understanding of the nature and behavior of cost is must for regulation of control of the cost of production. तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए मुझे आई शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट what is mean by average cost, what is mean by variable cost, what is mean by fixed cost, what is mean by fixed cost per unit, that I should know, because these are going to change. They are showing their behavior with respect to production output. The cost of production depends on the money forces, and the understanding of the functional relationship of a cost to various forces will help us to take the various decisions. Yani money forces means what, the capital which is required to produce or to purchase the raw material, और उसका उसी कैपिटल का मेरे प्रोडक्शन से क्या रिलेशन है, and by understanding that relation I will take the decision whether to buy or whether to buy the product or whether to manufacture our own. तो अगर बाय करना है तो कितना क्वांटिटी में करना है, एक का ऑर्डर देना है, 10 की देना है, 10 की देना है, या बल्क में कुछ देना है. Getting this? So to take these kind of decisions and to invest the money into this raw material and into this fixed cost and variable cost, I have to take the decision by considering these cost functions. It plays an important role for determining the optimum level of production. आपका production level decide करने के लिए cost function affects, plays important role. And knowledge of cost and output relation helps manager to control the cost, to predict the profit, and to decide the price of product and to decide the promotional activity. तो cost output relation क्या है, cost कैसे vary होती है output के साथ. I'm talking about total variable cost, total fixed cost, and your total cost. So total cost is nothing but total variable cost plus total fixed cost. इसका दोनों का summation. So if we understand this total variable cost, total fixed cost, and total cost, then it will help us to make the cost control, profit prediction, and pricing and promotion of the product. अभी देखिए, there are two levels, that is the short term and long term. So in short term, change in the output, यानी level of activity means what, your production. Change in the production level is possible only by making change in the variable inputs like raw material and labor. Change in the output is possible only by making the changes in the raw material. तो raw material का ऊपर नीचे करके, लेबर का कम ज्यादा करके हम लोग हमारे आउटपुट चेंज कर सकते हैं in case of short, because fixed cost will remain for as it is.
एक मशीनरी जो लिया है दैट मशीनरी विल बी कंटिन्यू फॉर 1 year. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री आई हैव रेंटेड फॉर 1 year. गेटिंग दिस? So you can't reduce the fixed cost in short term. शॉर्ट रन में हम लोग फिक्स कॉस्ट रिडक्शन करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होता. हम लोग क्या कर सकते हैं? आई कैन चेंज माई रॉ मटेरियल, आई कैन चेंज माई लेबर and accordingly I can show my output. Try to understand. Now the inputs like land, building, plant, machinery are fixed in the short run. Short run में हम लोग ये बार बार चेंज नहीं करते, एक साल के लिए वो फिक्स होते हैं. बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये सब कुछ सेम होते हैं. Only we have scope to change our variable cost. Okay, it means that short run is the period not sufficient enough to expand the quantity of fixed. तो शॉर्ट रन में हम लोग फिक्स जो कॉस्ट है वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते. इट विल बी फिक्स फॉर 1 year. Thus the total cost in short run is composed of, the total cost कैसे बनती है? देखिए, 2 elements. One is the total fixed cost and second one is the total variable cost. अभी देखिए, इन शॉर्ट रन टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम रहने वाली. गेटिंग दिस? But I can change my variable cost. Which are my variable costs? My variable costs are material cost. My variable costs are the labor cost. My variable costs are some of the direct expenses. अगर मैंने लेवल ऑफ एक्टिविटी कम किया तो मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी कम होंगे, लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट कम नहीं होने वाला. अगर मैंने मेरे वेरिएबल टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर मैंने बढ़ाए तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने वाला है, मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, सिर्फ मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा. So total element of total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. अभी देखिए, the total fixed cost remains same throughout the period and it is not influenced by the level of activity. तो मेरा टोटल कॉस्ट कंपनी का रेंट चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, तो कंपनी का टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होने वाला है फॉर वन पर्टिकुलर ईयर. दैट इज समथिंग अबाउट शॉर्ट टर्म. लेकिन चेंज किसमें होने वाला है? वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने वाला. Now the firm will continue to incur these costs even if the firm is temporarily shut down. तो ये कॉस्ट फर्म को आने वाले, टोटल कॉस्ट आने वाली है. एट दैट टाइम इफ फर्म इज गोइंग टू शट डाउन, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? फर्म हैज टू बियर द फिक्स्ड कॉस्ट. दैट यानी रेंट उसको देना ही देना फॉर 1 year बिकॉज दिस इज द रेंट एग्रीमेंट ऑफ फ्यूचर पीरियड एज वेल. एक साल का रेंट एग्रीमेंट है. अगर हम लोगों ने प्रोडक्शन नहीं किया तो मुझे जीरो रॉ मटेरियल कॉस्ट रहेगा, जीरो लेबर कॉस्ट रहेगी, जीरो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, 5,000 रहेगी. Try to understand. Though we have shut down the business, even though total fixed cost remains same, fixed cost per unit varies with change in the level of activity. Total fixed cost same है. For example, 1,000 as a remuneration to me. लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट्स चेंज हो जाएंगे उसके हिसाब से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू चेंज. गेटिंग दिस? नाउ ऑन अदर हैंड, total variable cost increases with increase in the level of activity. जैसे भी प्रोडक्शन बढ़ेगा उससे मेरा लेबर मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा. एंड डिक्रीजेस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी. अगर कम किया तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट नीचे आएगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ाया तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट ऊपर आ रहा है. ओके, नो, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट, मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्शन में पॉजिटिव रिलेशन है. गेटिंग दिस? but fixed cost और level of activity में relation fixed cost per unit and level of activity में negative inverse relation. Okay, if the firm is shut down, there are no variable cost. अगर मैंने प्रोडक्शन जीरो किया तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा जीरो रहेगा. even though total variable cost is variable, so variable cost per unit will be constant. per unit हमारा कांस्टेंट रहेगा. तो जितना भी हम लोग एडिशन करेंगे इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज में, उसके हिसाब से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 5 into नंबर ऑफ यूनिट्स, फॉर एग्जांपल 10. so 5 into 10 is equal to 50. अगर 5 into नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा है, मैंने 20 किए, तो 5 into 20 is equal to 100. गेटिंग दिस? So total variable cost per unit is again fixed.
Getting this? So with respect to level of activity, you are doing the multiplication and you are calculating. Okay. So this is the trend of total variable cost, total fixed cost, and total cost. So look at this, some of the formulae. Total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost होती है. अभी how to calculate total fixed cost? So total fixed cost is the total fixed cost is equal to total cost minus total variable cost. अगर मुझे total fixed cost निकालनी है तो I can calculate by subtracting total variable cost to the total cost. Then how to calculate total variable cost? Total variable cost is equal to total cost minus total fixed cost. And total cost is equal to total cost, total fixed cost when output is zero. जब variable cost वहाँ पे zero आता है. Okay, just go through this slide. Try to understand the relationship between fixed cost, variable cost, and total cost. Then we will go to the next slide. Yes. Yes, understood this? Now हम लोगों ने क्या देखा? टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मेरा जो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होती है. जितना भी वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज हम लोग ऐड करेंगे तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट का डिक्रीज होता है. लेकिन इसका क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट का? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एज लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, yes, look at this diagram, try to understand, then I will explain you. I'm giving you some time, read this and then we will discuss about this. आता थंडी नसते वाजत. Let us discuss now. Yes, sir. हाँ, हम लोगों ने we have just studied what is mean by total fixed cost, what is mean by total variable cost, what is mean by total cost. Okay, अभी देखिए, towards first column I have shown my output. Okay, तो पहला जो 1 लिखा है वो आउटपुट नहीं है. So this is the column number 1 2 3 4 ऐसा column number दिया है. My output starts from the 0. So if I produce 0 units, then I produce 1 unit, 2 3 4 5 6 and 7 units I am going to produce. उसके बाद along with this my total cost, look towards the total fixed cost. So if I produce 0 unit at that time, my total fixed cost is 240. अगर 2 बनाया 240, 3 बनाया 240, 4 बनाया 240, 240, 240, up to 7 unit, my total fixed cost is same. Understand this? Look at the level of activity and total fixed cost. Fixed cost is fixed throughout the your output.
0 से लेके 7 यूनिट तक मैंने प्रोडक्शन बनाया, लेकिन मेरा कॉस्ट सबके लिए इक्वल है। गेटिंग दिस, यस और नो? ट्राई, टेल मी फास्ट। Yes, sir. अभी लुक टुवर्ड्स द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब मेरा 0 प्रोडक्शन है तब मुझे कुछ भी कॉस्ट नहीं, इसलिए मैंने वहां पे 0 लिखा है। एंड 0 यूनिट माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0। If I produce 1 unit at that time, my total variable cost is 120 rupees. Then at 2 units, my total variable cost becomes 200. For 3 units, 270. 4 units, 320. 5 units, 440, 420. 6 units, 552. And for 7th unit, 720. मीन्स व्हाट, लुक टुवर्ड्स, जैसे कि मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन लेवल मेरा आउटपुट बढ़ाऊंगा, उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट फिक्स कॉस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग। गेटिंग दिस? नाउ हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट? सो टोटल कॉस्ट इज एडिशन ऑफ कॉलम नंबर 2 एंड एडिशन ऑफ कॉलम नंबर 3, दोनों का एडिशन। तो वो कितना आएगा टोटल कॉस्ट? 240 प्लस 0 इज इक्वल टू 240। Column number 4 is the total cost. So column number 4 is the addition of column number 2 and column number 3. So it is total cost for 0 unit is equal to 240. Then for 1 unit is equal to 240 plus 120 is 360. For second unit, 240 plus 200 is equal to 440. For 3 units, 240 plus 270 is equal to 510. For fourth unit, 240 plus 320 is equal to 560. For fifth unit, 240 plus 420 is equal to 660. For sixth unit, 240 plus 552 is equal to 792. And for last, 240 plus 720 is equal to 960. Now, look at the total variable cost. Sorry, total cost. Total cost was increasing up to 7th unit. क्यों increase हुआ है total cost? कौन बताएगा मुझे? मेरा टोटल कॉस्ट किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है? यस, टेल मी। इसमें इंक्रीज क्यों दिख रही है? कॉलम्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। Due to total variable cost, it varies. Exactly. Who is speaking? Suvarna. Yes. So there is increase in variable cost. There is no increase in fixed cost. सिर्फ एंड सिर्फ मेरा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से मेरा टोटल कॉस्ट चेंज हो गया। ओके, नाउ once we have calculated the total cost, so total cost is increasing only due to change in variable cost, because fixed cost is not affecting, because fixed cost is fixed for all level of activity. अगर इधर तक समझ में आया ना, बाकी वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, जो कुछ मेरा फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को मैंने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया है, देन आई विल गेट fifth column, that is average fixed cost. Average fixed cost is equal to total fixed cost, that is column number 2 divided by column number 1. Try to understand. So average fixed cost is equal to total fixed cost divided by your output. तो मेरा पहला आउटपुट है 0, तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 240 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? डैश आएगा। मींस व्हाट? देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ एवरेज, इट विल बी नॉट देयर। Then again 240 divided by 1 unit equal to 240. उसके बाद 240 divided by 2 is equal to 120. Then 240 divided by 3 is equal to कितना आएगा? 1 minute 80 रहेगा। Then 240 divided by 4 is equal to 60. Then 240 divided by 5 is equal to 48. 240 divided by 6 is equal to 40. 240 divided by 7 is equal to 38. Just see here, average fixed cost per unit is decreasing. देखिए ना, मैंने बोला था कि टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, बट पर यूनिट जितना भी हम लोग प्रोडक्शन करोगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट विल डिक्रीज, बिकॉज दिस फिक्स कॉस्ट विल स्प्रेड अक्रॉस द प्रोडक्ट्स. फिक्स कॉस्ट विल स्प्रेड
across the product. तो जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बनाऊंगा वैसे वैसे पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट कम होके जाएगी, क्योंकि दिस फिक्स कॉस्ट इज एप्लीकेबल टू एंटायर यूनिट्स. Understood fixed cost per unit or average fixed cost? Tell me fast, yes or no? Yes, sir. Okay, now let us go for average variable cost. Average variable cost, again we are dividing by column number 1. Output से मुझे total variable cost को divide करना है. Just look towards. Look at the average variable cost. Average variable cost means what? It is total variable cost divided by your output. So first variable cost कितना है? 0 divided by 0 dash. उसके बाद 120 divided by 1 120, 200 divided by 2 is equal to 100. Then 90 divided by 3, sorry, 270 divided by 3 is equal to 90. 320 divided by 4 is equal to 80. 420 divided by 5 is equal to 84. 552 divided by 6 equal to 92. And 720 divided by 7 is equal to 103. So this is something about your average variable cost. Then just look at the average variable cost. Variable cost was decreasing. पहले 120 से 100 गई, 100 से 90 गई, 90 से 80 गई, 80 के बाद नीचे जाना चाहिए था, लेकिन उधर से 80 से बढ़ रही है. देखिए 120 से 100 गई, 100 से नीचे गई, 90 गई, 90 के 80 गई, 80 के बाद 84 हुई. मींस व्हाट? इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. यानी 4 नंबर से लेके अगर हम लोग 5वां प्रोडक्शन करते हैं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग. मुझे वही पॉइंट ढूंढना है. कौन सा पॉइंट है, कौन सा लेवल ऑफ एक्टिविटी है जहां से मेरी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है. गेटिंग दिस? तो 4th नंबर यूनिट पास करने के बाद जब when we start to produce 5th unit, at that time my total average variable cost increases. ध्यान में इतना रखिए. Then let us go for next column, that is average total cost. So how we have calculated the average total cost? So average total cost is equal to, again, column number 4 divided by column number 1. 4 और 5, 4 और 1 नंबर कॉलम का रेशियो एवरेज टोटल कॉस्ट. So that is 240 divided by 0 dash, 360 divided by 1 is equal to 360. 440 divided by 2 is equal to 220. 510 divided by 3 is equal to 170. Then 560 divided by 4 is equal to 140. Then 660 divided by 5 is equal to 132. Then 552, sorry, 792 divided by 6 is equal to 132. And 960 divided by 7 is equal to 137. Now look at the cost. Total average cost देखिए क्या हो रहा है, whether it is increasing or whether it is decreasing. 360 से 220 गया, उसके बाद 170, उसके बाद 140, उसके बाद हमारा 132, 132, 137. उसके बाद देखिए टोटल एवरेज कॉस्ट 360, 220, 220 to 170, उसके बाद 140, 132, 132, and then it is increasing. Means what? Your total level of activity अगर 6 से आगे जाती है, if you start to produce 7th unit, at that time your total cost increases. Your total cost increases. कितना गया? 132 से लेके 137 हुआ. So this is not affordable to produce 7th unit ना. समजतंय का हा कन्सेप्ट? जोपर्यंत माझी टोटल कॉस्ट कमी होते तोपर्यंतच मी प्रोडक्शन करायचं आहे. मी किती प्रोडक्शन करायचंय? 6. कारण काय होतंय की 6च्या नंतर 7वं प्रोडक्शन केल्यानंतर माझी टोटल कॉस्ट इज इन्क्रीजिंग. माझी टोटल कॉस्ट इन्क्रीज होते, म्हणजे माझी इकॉनॉमी ऑफ स्केल किती आली? 7 युनिट्स, सॉरी 6 युनिट्स. हा कन्सेप्ट समजलाय का ऍव्हरेज टोटल कॉस्टचा? Yes, sir. Okay. At the last, marginal cost. How we are going to calculate the marginal cost? So 8 number column. So just see,
the total variable cost. On the basis of total variable cost, we will calculate the marginal cost. आता बघा, first marginal cost will remain as it is. यानी 120 divided by 120 minus 0 is equal to 120. Look at the column number 3. Column number 3 बघा. 0 production आणि 1 production ची variable cost. 0 ची आहे 0 आणि 1 ची आहे 120. So 120 minus 0 is equal to 120 आला. त्याच्यानंतर पुढची एक मिनिट हा, मी तुम्हाला इथं पेननी दाखवतो. ओके, सी त्या दोघांची व्हॅल्यू इथे दिसते. ओके, त्याच्यानंतर या दोघांमधला डिफरन्स, खालच्या दोघांमधला डिफरन्स 200 minus 120 is equal to 80. समजतंय का? Yes, sir. पटकन बोला. त्याच्यानंतर marginal cost is the difference between two variable costs. Try to understand the formula. Again, या दोन्ही मधला डिफरन्स 270 minus 200 is equal to means what? My marginal cost. Try to understand. माझी marginal cost काय होत चालली? जसं मी प्रोडक्शन वाढवतोय, तसं माझी मार्जिनल कॉस्ट पण वाढत चाललेली आहे. परंतु एक अशी लेवल येते, किती नंबरची? 4 नंबरची लेवल आलेली आहे इथे, की जिथं माझी मार्जिनल कॉस्ट कमी होत आलेली आहे. परंतु जेव्हा मी 5वा प्रोडक्शन करू, when I start manufacturing 5th unit, at that time again my marginal cost is increasing. इथे बघा, 50 ची डायरेक्ट कमी होत आली, 120 80 70 50 झाली, इथं 100 झाली, म्हणजे माझी मार्जिनल कॉस्ट अगेन इंक्रीजेस. उसके बाद डिफरन्स बिटवीन दिस टू, परत बघा कॉस्ट वाढली. देन डिफरन्स बिटवीन लास्ट, इट इज मार्जिनल कॉस्ट increases. म्हणजेच if I look towards the marginal cost, that time I have to stop at 5th unit, sorry 4th unit. 4 पेक्षा जास्त प्रोड्यूस केली तर माझी मार्जिनल कॉस्ट पर युनिट वाढते. म्हणजेच माझी ऑर्डर्स वाढल्या, माझी ऑटोमॅटिकली कॉस्ट सुद्धा व्हेरिएबल कॉस्ट वाढते. हे कशामुळे होतंय? फिक्स कॉस्ट तर तुमची फिक्स राहते, फक्त व्हेरिएबल कॉस्ट चेंज होण्यामुळे माझी टोटल कॉस्ट चेंज होते. टोटल कॉस्ट चेंज झाल्यामुळे माझी मार्जिनल कॉस्ट पण चेंज होते. आता इथे बघा, तुमची टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट बघा, जोपर्यंत कमी होते तोपर्यंत तुमची मार्जिनल कॉस्ट कमी होत राहते. कळतंय का? तुमची जोपर्यंत टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट कमी होते तोपर्यंत तुमची मार्जिनल कॉस्ट पण कमी होत जाते. परंतु टोटल कॉस्ट इज अगेन डिक्रीज. सो दिस इज समथिंग अबाउट, दिस इज द कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप बिटवीन इन शॉर्ट टर्म. समजलंय का सगळ्यांना? अजून विचार करा, नसेल समजलं तर अजून एक्सप्लेन करतो. अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. टेक 1 minute टू डिस्कस, टू थिंक अबाउट. हा चार्ट खूप महत्वाचा आहे. क्लियर? Yes, sir. ओके. देन नेक्स्ट, जो कुछ हम लोगों ने अभी जो स्टडी किया, व्हाट वी हैव स्टडीड, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड योर टोटल कॉस्ट. उसका ग्राफ मैंने यहाँ पे दिखाया है. जस्ट लुक एट दिस ग्राफ. My total fixed cost will remain fixed throughout the output. माझी टोटल कॉस्ट बदलणार नाहीये, परंतु माझी व्हेरिएबल कॉस्ट, टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट, इफ आय प्रोड्यूस 0, दॅट टाइम माय टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट, इथं बघा जेव्हा मी 0 प्रोडक्शन करतोय तेव्हा माझी व्हेरिएबल कॉस्ट पण 0 आहे. जसं माझं प्रोडक्शन वाढेल तशी काय होते, माझी
व्हेरिएबल कॉस्ट वाढत जाते, व्हेरिएबल कॉस्ट वाढत जाते, परंतु माझी फिक्स कॉस्ट तर फिक्सच राहते. बरोबर आहे का? जसं माझी फिक्स कॉस्ट फिक्स आहे, परंतु माझी व्हेरिएबल कॉस्ट वाढत जाते. परंतु टोटल कॉस्ट म्हणजे काय आहे? सम ऑफ युअर व्हेरिएबल कॉस्ट अँड फिक्स कॉस्ट. त्यामुळं जेव्हा माझी झिरो प्रोडक्शन आहे, तेव्हा टोटल कॉस्ट किती आहे? इथं आहे. दॅट इज माय टोटल कॉस्ट. बिकॉज टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो है. उसके बाद अगर मैं मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगी इतनी. अगर मेरा प्रोडक्शन लेवल इधर रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस युअर टोटल कॉस्ट दैट यू हैव टू बियर. जसं मी वरती जाईल, माझी प्रोडक्शन कॉस्ट वाढवेल, तसं काय होतंय, माझी टोटल कॉस्ट वाढत चाललेली आहे. बघा इकडे. ओके, अशी वाढत जाते. परंतु हा जो दोन्ही मधला जो गॅप आहे, हा कमी जास्त होतोय का बघा. टोटल कॉस्ट आणि याच्यामधला जो गॅप आहे, हा गॅप. दुसरा कलर यूज करतो इथे. फॉर एक्झाम्पल हा कलर यूज करतो. हा जो गॅप, हा जो गॅप आहे, कलर अजून थोडा वेगळा घेतो. हा जो गॅप आहे मधला, हा गॅप इथून ते इथपर्यंतचा, हा दोन्ही मधला, तो सेम पॅरलली जातात. याचा अर्थ काय आहे? टोटल कॉस्ट आणि तुमचं व्हेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आणि टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट आर गोइंग पॅरलली. बिकॉज का पॅरलली जातात? कारण तुमची फिक्स कॉस्ट ही फिक्स आहे. दिस इज नॉट चेंजिंग एव्हरी डे, एव्हरी युनिट. हे समजलं का? पटकन मला सांगा. Yes, sir. Yes, sir. हा, आता ह्याचं जे काही एक्सप्लेनेशन आहे ना, ती मी इथं दिलंय बघा. त्याचं जे एक्सप्लेनेशन हे सगळं सांगितलंय. आता मी थोडक्यात वाचून दाखवतो, काहीच नाही. हे जर तुम्हाला ग्राफ टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट आणि टोटल कॉस्ट समजला असेल तर तेच मी इथं सांगितलं. सी, in the graph x axis measures the output and y axis measures the cost. x axis वरती आउटपुट घेतलंय, y axis वरती कॉस्ट घेतली. टोटल फिक्स कॉस्ट इज द स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. माझी टोटल फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट गेलेली आहे, आणि इट डज नॉट चेंज थ्रू आउट द आउटपुट. ही चेंज होणार नाही किती आउटपुट चेंज केलं तर. बट टोटल व्हॉट अबाउट व्हेरिएबल कॉस्ट? टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट कर्व इज द अपवर्ड रायझिंग फ्रॉम द ओरिजिन एक्स अँड वाय च्या ओरिजिन पासून तो वाढत वाढत गेलेला. बिकॉज total variable cost is zero when there is no production. When there is no production, variable cost will be zero, and it increases as the production increases. Just the production वाढेल तसं तो increase होत आहे. Okay. The shape of total variable cost curve depends upon the productivity of variable factors. Which are your variable factors and how you are using your resources? Accordingly, the shape of variable cost can change. How efficiently you are doing your manufacturing activity. Accordingly, shape of this total variable cost changes. Total cost curve, यानी ऊपर वाला कर्व. Total cost curve is also upward rising, not from the origin but from the total fixed cost line. Total cost यहाँ से increase नहीं हो रही, total cost यहाँ से आ रहे, because total cost consists of variable cost plus fixed cost. जब variable cost zero है, zero production तो मेरा फिक्स कॉस्ट तो है, मुझे फिक्स कॉस्ट रेंट देना है. इफ आई एम प्रोड्यूसिंग जीरो यूनिट, देन टोटल कॉस्ट कर्व इज आल्सो अपवर्ड राइजिंग, नॉट फ्रॉम द ओरिजिन बट फ्रॉम टीएफसी लाइन. टीएफसी लाइन से वो इंक्रीज हो रही है. दिस इज बिकॉज इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट. अगर जीरो प्रोडक्शन है तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट मुझे किसी भी हालत में देनी. It should be noted that the vertical distance between the TVC curve and TC curve, यानी ये जो येलो कलर से मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये vertical distance curve is the constant. It will remain same throughout the curve, because distance represent the amount of fixed cost which remains constant. जो fixed cost same है, उसकी वजह से मेरा टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, इस दोनों में से जो कुछ डिफरेंस है वो स्टेडी रहे. Constant represent the fixed cost which remains the constant. Hence, TC curve has same pattern behavior of TVC. Total cost curve and total variable cost are showing same pattern of behavior.
अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट? लवकर बोला. Yes, sir. आता यातलं आय थिंक वी हॅव फिनिश्ड आवर टाइम. सो टुमारो वी विल फिनिश थर्ड युनिट. एक ही आर्टिकल बाकी है, दैट इज कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन. तो एक ही आर्टिकल बाकी है यूनिट नंबर 3 का. देन वी विल फिनिश दिस थर्ड यूनिट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रेवेन्यू एनालिसिस. एक्चुअली आज होना चाहिए था लेकिन नहीं. ठीक है. So let us stop here. I think we have finished our time. Thank you so much. Thank you, sir.